So a very great morning, dear students. I hope all students are joining today. Fine. So previously we have seen one-dimensional array, two-dimensional array, multi-dimensional array. For that, we are going to see one example so that you can clear all the points. Okay, so I am just giving here. Yes, so this window is visible. All students. Yes, ma'am. Okay, thank you. So just I'm giving the example difference between these one-dimensional, two-dimensional, and multi-dimensional. Okay, so that this is a one-dimensional. So one-dimensional array. I'm talking about one-dimensional array. Okay, so one-dimensional array is what? There is only one dimension. Means let's say for example, data type, integer, name of the array, that is array, and the dimension, that is if I'm giving here 10. Now, this is one dimension array, okay, that I'm just giving the data type of that variable, name of that array, and one dimension is one square bracket is given, and there is the size of that array. Means we are storing the 10 elements here. Okay, so this is clear to everyone. This first one is what? One dimensional array. Okay, second point will be what? Two dimensional array. Okay, so what is two dimensional array? So we are concentrating, we are revising whole the part so that you can clear all the concept. So two dimensional arrays means what? Two dimensional array का example क्या होगा? There is a combination of rows and columns we have seen. Again, data type is same, name of the array. There is a two dimension, means two square brackets are given. Let's say I'm taking here 10, 10, 10 means just concentrate here. 10, 10 I'm giving means here we are talking about 10, 10. That is we are using here this 10 represent first 10 represent, this one represent number of rows, and this one represent number of columns. Let's say I'm talking about here the first dimension is number of rows, is number of rows, okay, and the second dimension, that is number of column. Okay, so second dimension comma second dimension will be second dimension will be what? Number of column. So first dimension says number of rows and second dimension gives number of columns. Okay, so this point is very important. So dimension say number of columns. Okay, so this is called as a matrix actually. Okay, the combination of rows and columns. Okay, so this is our two dimensional array. I hope everyone is clear. So हम लोगों ने देखा है how to access the element into array, or we can say that using a matrix. Okay, we have seen these points till now. Okay, so is there any doubt? You can ask the question, no problem. Okay, third, that is, let's say I'm talking about, यहाँ से हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, बट आई एम गिविंग हियर अ थर्ड डायमेंशन. सो थर्ड डायमेंशनल एरे कैसे होगा? थर्ड डायमेंशनल एरे, ओके, सो अगेन थर्ड डायमेंशनल एरे मींस एग्जांपल क्या आएगा? दिस इज द एग्जांपल ऑफ इट. अगेन द डेटा टाइप ऑफ दैट एरे, name of that array, let's say integer, I'm going to store the element, and the three dimensions are given, means three square brackets we are using here. Okay, so first one we are storing, let's say this is 10, this is again 10, okay, and the value we have to store, that is 5. Okay, so what is the difference in that? Okay, so what it is exactly? In third dimensional array, first gives number of rows, second gives number of columns, and last dimension gives the actual value. Okay, so it is the same that we have written here. Okay, so just I'm copying here and you just see that point. Okay, okay, I'm just writing here again same point here. Okay, so what is that? The first dimension says number of rows, second dimension says number of columns, and last one will be, what is the last value? Last value will be given as a, yes, the last क्या है अपना value. So last dimension, third dimension, third dimension, third dimension is says number actual value. Okay, so actual value we are storing into the last dimension. So उसका representation हम लोग फिर से देख लेते हैं so that you can clear all the points here. Okay, so इसका मैं अभी example आपको एक बार revise कर देती हूँ so that you can easily understand whole the parts. Okay, so I'm just
concentrating your third dimensional array. In C or C++, don't concentrate on language here, just clear the concept. This is our three-dimensional array. The first one given that number of rows, second dimension given that number of columns, and last one will be value. So means what? हम लोग क्या कर रहे हैं, दो rows use कर रहे हैं. That's why the first curly bracket, this is bracket given as this is the first row and this is second row. Okay, in which we are using two columns here. Columns कितने हैं? This is first column and this is second column. Okay, so I hope everyone is agree. And the value, each row storing the value will be 2. मतलब this is every, ये जो सेक्टर है ये क्या है, पहला रो है, पहला कॉलम है, उसमें जो वैल्यू है, नंबर ऑफ वैल्यूज भी कितने रहेंगे, 2 रहेंगे. Means likewise we are going to store the value into that matrix. I hope everyone is agree with this. Okay, so इसका मैं फिर से आपको क्या करती हूँ, बना के दिखाती हूँ, so that again you have clear that concept. Okay, so again मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, 3-dimensional जो array है उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है मैं फिर से आपको बताती हूँ. लेट्स से फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे लिया था, the example is, let's say I'm taking the value here, let's say 2, 2 and 2. Okay, this is my third dimensional array. तो वो मेमोरी में कैसे होगा, तो पहला वाला डायमेंशन बोल रहा है नंबर ऑफ रोज, मतलब रोज कितने हो गए. सो पहला वाला ब्लॉक जो है ये फर्स्ट 2 रोज है, ये मेरा फर्स्ट रो एंड ये मेरा सेकंड रो. आई होप एवरीवन इज एग्री. ओके, एक्चुअली दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ब्लॉकिंग एक्चुअली. ओके, दिस इज योर फर्स्ट रो. फर्स्ट रो में ये फर्स्ट रो है और ये आपका सेकंड रो है. फिर से मैं इसको टाइटल देती हूँ, दिस इज आवर फर्स्ट रो एंड दिस इज आवर सेकंड रो. ओके, दिस इज व्हाट, सेकंड रो. ओके, सो दिस इज आवर 2 रो. 2 रोज है तो 2 रोज आएंगे. उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 2, मतलब यहाँ पे कॉलम्स कितने आएंगे, 2 2. अगेन दिस इज 1 and 2 column. अगेन ये each row having 2 columns, मतलब इसके भी 2 columns और यहाँ पे इसके भी 2 columns. I hope everyone is agree. So likewise we have represented it. ये देखो मैं एक के नीचे एक लिखती हूँ तो आपको समझ में आएगा. ओके, सो 2 रोज है, 2 कॉलम्स है. ओके, दो पहले तो ये 2 कॉलम्स रोज हम लोगों ने लिख लिए, उसके बाद ये हमारे कॉलम्स हो गए. दिस इज द 2, each row having 2 columns. So this is 2 column, again this is 2 column. उसके अंदर 2 वैल्यू है, मतलब उसके अंदर फिर से हमारे क्या आएंगे, ऐसे blocks आएंगे. Okay, so this is our first block, this is our second block, again in which we can represent, this is our first block, this is our second block. Likewise here, this is our first and this is your second. Why this point I am repeating again, because this question is very important when you are facing the technical interview in front of industrial person. They will ask the question related to how the one-dimensional, 2-dimensionals are easy, but instead of after that multiple dimensions, that is 3-dimensional, 4-dimensional, n-dimension, how we are going to represent that array, so you should know. Okay, that's why I'm repeating this point. So I hope everyone is agree. Okay, again I'm showing the presentation of it so that you can clear. Just see here, and every having again 2 value. Okay, so इसके अंदर हम लोग कैसे value represent करेंगे, इसके अंदर हमारे value आएंगे, that is 0, 1. Like that you can store the value. जैसे मैंने यहाँ पे values store किए हैं. I hope everyone is agree with this. Okay, is it clear everyone? Just give me the acknowledgement so that I can clear all the doubts, dear student. Okay, 0, 1 जैसे मैंने यहाँ पे 2, 3 वैल्यू स्टोर किए, यहाँ पे स्टोर किए 4, 5. इस ब्लॉक के अंदर ब्लॉक हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं. उसके अंदर क्या हो रही है, हमारी वैल्यू स्टोर है. जैसे मैं वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ, whatever I want, that is 5, then 6, then 11, then 2, whatever you want. Okay, you can store the value. This is the 20, this is 11 again, this is the 12, this is the 33, likewise. Okay, so this is what 3-dimensional array. I hope everyone is agree with this. So block के अंदर block represent करना है और according to that we are going to store the value. I hope everyone is clear. 1 dimension, 2 dimension, 3 dimension, and we are talking about the multi-dimension. So multi-dimension मतलब we are using, for example मैं बोल रही हूँ multi-dimensional. मल्टी-डायमेंशनल में क्या क्या आएगा, मल्टी मतलब इट कैन बी, डायमेंशन कैन बी, यू कैन थिंक ऑन दैट कि हाउ मच डायमेंशन यू कैन टेक. ओके, सो सपोज मैं नेक्स्ट एग्जांपल देती हूँ, दैट इज नेक्स्ट विल बी व्हाट, मल्टी डायमेंशन का नेक्स्ट एग्जांपल है अपना
that is let's say I'm taking the example of multidimensional array, that is we are taking the four dimensions or five, whatever you want. Let's say I'm taking, just concentrate here. So till now everyone is clear the concept of one dimension, two dimension, three dimension, and अभी हम लोग क्या करने वाले, मल्टी डायमेंशन, लेट्स से 4 5. ओके, सपोज आई एम टेकिंग द एग्जांपल इंटीजर एरे. ओके, अभी मैं क्या कर रही हूँ, लेट्स से 5 डायमेंशन ले रही हूँ, मतलब 1 2 3 4 5. I am taking 5 dimensions, dear students, and the first and the representation of this 5 dimension, always remember that after 3 dimensional there is no number of rows and columns concept, there is directly blocking concept. Okay, so ये start होता है from blocking. Okay, so what is mean by blocking? Actually we are going to see. Okay, blocking concept we need to see. I request Tejaswini just take this screenshot, because lots of students have joined the lecture. 51 counts are there, so you have to click the attendance screenshot also. Okay, fine. Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay, so यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? एनी डाउट? अभी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. मैंने अभी आपको NB 10B, यस, एनी डाउट? सपोज मैंने आपको 10B डायमेंशन दिए, तो भी आप लोगों को क्या करते आना चाहिए. सपोज मैंने आपको क्या किया, यस, 10B दिए तो भी आप लोगों को रिप्रेजेंट करते आना चाहिए. ओके, सो अभी मैं क्या बोल रही, ब्लॉक. लेट्स से मेरे पहले ब्लॉक रहेंगे 2, उसके बाद ब्लॉक रहेंगे लेट्स से 3, उसके बाद अगेन रहेगा 2, उसके बाद रहेगा लेट्स से 5, उसके बाद रहेगा लेट्स से 1. ओके, अभी मैं आप लोगों को एक काम बोलने वाली हूँ. I have giving one assignment for how to represent multi-dimensional array, और वो multi-dimensional array को represent करके दिखाना. Okay, still everyone is clear this point. Now we need to focus on how multi-dimensional we are going to represent. Always remember that the first 1 2 3 4 जो 5 dimensional है, लास्ट का जो डायमेंशन है it represents the value. Okay, last block, last dimension represents actual value. Okay, so actual value हमारी कहाँ पे स्टोर होगी, लास्ट डायमेंशन पे. सो एवरीवन शुड concentrate on this point, it's very important. Okay, so अभी मैं रिप्रेजेंट करके दिखाने वाली हूँ इसका डायमेंशन कैसे, पूरा मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे है, और वी कैन से दैट अ मल्टी डायमेंशनल array. ओके, सो मैंने क्या बोला, पहले 2 रो, पहली वैल्यू क्या बोल रही है, व्हाट इज द फर्स्ट डायमेंशन, दैट इज 2 रो. ओके, means actually it's not a row, it's a blocks. Okay, so I'm taking here first block, this is my first block. Okay, this is plus first block, and second one is, this is what, second block. Okay, ये मेरे पहले ब्लॉक हो गए. दिस इज ब्लॉकिंग कंसेप्ट एक्चुअली. ओके, सो यहाँ पे ब्लॉक मैंने रिप्रेजेंट किया. अभी फर्स्ट ब्लॉक में ऑलवेज रिमेम्बर दैट इन ईच ब्लॉक हैविंग अगेन 3 ब्लॉक्स. मतलब हर एक ब्लॉक में, जैसे 2 ब्लॉक है, क्योंकि पहले डायमेंशन मुझे 2 बोल रहे, इसलिए 2 ब्लॉक्स है. 2 ब्लॉक के अंदर अगेन 3 ब्लॉक्स. मतलब कैसे आएगा, this 1, okay, comma, this 2, comma, this 3. Again same for second block, this is 1, comma, this is 2. Dear student, this type of question not asked in examination. This is for knowledge purpose. I am revising it because it is very important. You should know how we are going to represent the multi-dimensional array. Okay, so I hope everyone is clear. This type of question never asked in examination, but you should know. Okay, so everyone is clear. This is first value will be 2. That's why 2 main blocks. Again, each having 3 blocks. Again, each having 2 blocks. मतलब इसमें फिर से क्या आएंगे, 2 blocks, each having 2. Again, same here. Again, we have to represent, this is 2 blocks. Again, we have to represent this 2 blocks. Similarly, in second block, every block having again 2 blocks. Okay, comma, this 2. Likewise, you can represent multi dimensions here. Just imagine it, you can represent multiple dimensions here. Okay, this is 1 and this is 2. I hope everyone is agree with this. Okay, अभी हमारा कहाँ तक हो गया हम लोग, ये देखो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया. पहले कितना था, 1 के अंदर 2 थे. ओके, 2 के अंदर कितने हैं, 3 थे. 3 के अंदर फिर से 2 आ गए. अभी 2 के अंदर फिर से 4 रिप्रेजेंट करना है. मतलब each having 1, then 2, then 3, then 4.
Similarly, we have to represent in second, that is 1, then 2, then 3, then 4. Again, similarly, we have to represent here, that is 1, then 2, then 3, then 4. Again, same, that is, just imagine it, this is the blocking concept, dear student. 2, then 3, then 4. Okay, last remaining, okay, this one. Each block, again, we have to represent 4 value. 1, 2, 3, and 4. Similarly, here, next point will be, the next block is remaining, right? So next will be here. Again, we have to represent 4. 1, then 2, then 3, then 4. Okay. So similarly, we have to represent 4. Again here, this is 1, then 2, then 3, then 4. Each block again. Okay. So this is 1, then 2. Okay. This is 2, then 3, then 4. Similarly, for our next block, that is 1, then 2, then 3, then 4. Okay. Next again, 1, 2, 3, and 4. Similarly, we have to represent the next block, that is this one. Again, 1. कितने हैं, कितने blocks बनाने हैं? फिर से 4 blocks बनाने हैं. Again, here we have to create 1, then 2, then 3, then 4. Okay, so likewise we have created 4 flow block. This is a representation of multi-dimension. Just imagine it. And the last dimension says actual value. मतलब is हर एक block में एक value store रहेगी. जैसे 10, here is 20, there is 44, here is 11, there is 1, or here is 12. Every block there is a single value. Then 35, then 37, then after block that is 77, then 8, then 9. Whatever value, numerical value you can store on that block. Okay, 10, then 11. National companies are using that multi-dimensional. We are not using for practical purpose. Okay, 87, then 88. When time allows us, we are trying to do this. Okay, then 66, the next one will be 99, then 11, whatever value you can store, that is 11, then 12. Okay, each block having single value. Okay, let's say I'm talking about the value is 9, then 45. You tell me the value which one you want to store. 78. है ना? Some of the students are having, madam, this is my lucky number. You can tell me, no problem. Okay, this is what 34. Then now our first block is finished, dear student. Then our second block. Okay, here is I'm storing, that is 12. This is 34, then 33, then 56. Likewise, we can store the value 56 and 78, then 89, that 66, then 67. The next block will be, I'm going to store the value here, that is 50, then 51, then 53 or 43, 53. Likewise, each block we are going to store the value, that is 67, then 87, then 89, then 88. Okay. Likewise, we are going to store the value. The next will be, there is 1, it is 2, 3. You can store the numerical value, whatever you want. Okay. So likewise, we have stored the value here. Just see here, that is 6, then 7, 8, then 9. Just imagine it. This is a representation of multi-dimensional array. That is, I am giving the 5 dimension here. That is first block. Then again, each block having the 3 blocks. Again, 3 blocks having 2 blocks. Again, 2 blocks. Each 2 block having 4 blocks. And finally, last one is value. So I hope everyone is clear the concept of multi-dimensional array. Don't take a stress of the madam कैसे होगा, ये तो बहुत difficult है, ऐसा नहीं है. It's too much easy task. You should understand what exactly it is. Okay. So I hope everyone is agree with this. Any doubt till now? किसी को doubt है?
Anybody having some doubt? Yes, you can ask the question or give me the acknowledgement that madam multidimensional array is clear. I hope everyone is clear. Just give me. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you so much. So this is okay. So this is what our multidimensional array is. Okay, means we are representing the. You can represent, madam. आपने तो 5 लिया, हम लोग तो 10 ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं. Depends upon you. You can represent the arrays. Okay. So I hope everyone is clear the representation of multidimensional. Yes. Yes. Ma'am, one bracket is extra means I'm not understanding this. Which one? First block, Huh. in first block, this 10 is written in bracket. After that, one bracket is there outside 10. Where? Here in first. Yes, ma'am. First block in before Oh. 10. Okay. No. This, you are absolutely right. But this block, this representation of which block? ये जो second जो value है, ये देखो. Yes, ma'am. पहले तो हमने कितने लिए 2 रोज लिए. ओके. उसके बाद हमने कितने लिए? Yes, ma'am. 3 लिए. ओके. सो आपको जो ये एक्स्ट्रा लग रहा है ना, ये पूरे फर्स्ट ब्लॉक का है. समझ में आया? जो पूरा मेन ब्लॉक है. देखो यहाँ पे भी मैंने 37 क्लोज किया ना, तो उसके भी कितने क्लोज हुए? 1 2 3 4. ओके. उसका पकड़ के सिमिलरली हियर इसका भी कितना हो गया? 1 2 3 एंड 4. समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ये जो ब्रैकेट है ना, ये मेन ब्लॉक का है. दिस इज मेन ब्लॉक. यू हैव स्टार्ट फ्रॉम दिस वन एंड उसका एंड कहाँ पे आ गया? यहाँ पे. लाइकवाइज. आई होप इट इज क्लियर. यस अक्षय. Yes, ma'am. ओके, थैंक यू. ओके, सो Yes, लाइकवाइज. ओके, सो मेन ब्लॉक के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. दिस इज मल्टी डायमेंशन. आई होप एवरीवन इज एग्री. Ma'am, but ये 67 में भी 3 blocks है. हाँ ना, ये देखो अभी मैं आपको फिर से रिवाइज करती हूँ. ये जो है ना, ये तो क्लियर हुआ आपको. ये मेन ब्लॉक है, राइट? इसका ब्रैकेट Yes, है. ma'am. ओके. ये जो सेकंड वाला ब्रैकेट हमारा स्टार्ट हो रहा है ना, 67 का भी मैं बताती हूँ. नेक्स्ट कितने ब्लॉक से? 3 ब्लॉक से. तो 3 ब्लॉक्स मतलब दिस इज ये पहला वाला ब्लॉक. इसका ब्रैकेट कहाँ पे क्लोज हो गया? दिस वन. ओके. दिस इज योर सेकंड. दिस वन क्लोज एंड दिस इज योर थर्ड. तो हर एक जो ब्लॉक है उसको कंप्लीट करना पड़ता है ना. जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखते हैं, ये मेरा पहला ब्लॉक, राइट? उसके अंदर फिर से Yes, 3. तो ये 1, ये 2, ये 3. गॉट इट? अभी समझा? ये 3. तो अभी देखो Yes. ये 3 के अंदर फिर से कितने हैं? 2. तो अगेन आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस 1, दिस 2. अगेन आई हैव टू रिप्रेजेंट दिस 1, दिस 2. लाइकवाइज. समझ में? अभी लाइकवाइज वी आर मेकिंग द ब्लॉक फर्स्ट. ब्लॉक के अंदर ब्लॉक हम लोग बना रहे हैं और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कर रहे हैं. अभी समझ में आया? Yes, Yes. ma'am. Okay, fine. Thank you. Anybody having some doubt now? Yes, regarding multi-dimensional array, this is a representation of block. इतना याद रखो आप लोग कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉक है. यहाँ पे स्पेस दो थोड़ा तो समझ में आएगा. ये मेरा सेकंड का रिप्रेजेंट है, इसलिए ये उसके कितने वैल्यू है? उसके अंदर फिर से 2 ब्लॉक है, अगेन 4 ब्लॉक है. सो ब्लॉक जब बना रहे हो तभी आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेट करना है. ओके. सो आई होप एवरीवन इज क्लियर. फाइन. सो नाउ from our first unit, this is actually the points of second unit. I have covered that 1-dimensional, 2-dimensional, 3-dimensional array, and in which we have completed the representation of array in different dimensions, right? 1 2 3 and multiple. We have clear all these points. Okay, so now we are continuing the first unit part that is remaining. Then we'll continue the arrays concept again. Okay, so you have clear कहाँ से कहाँ हमारा flow जा रहा है. Okay, so next point regarding array, that is passing array as a function. So there is one important part and I'm going to ask the question, dear student, that is you should know the concept of function. Function means what? Function executes itself. जब किसी आपको function use करना है तो उसका execution individually होता है. First of all, the return type of this function is void, means it's return nothing, and name of the function is very important. My function is the name of the function, and in function the rounded bracket says that this is function and I am passing the parameter here. That is means we are passing arrays as a function in a argument in the C or C++. Okay, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? एरे को एज अ पैरामीटर हम लोग पास कर सकते हैं फंक्शन में और हम लोग यहाँ पे फंक्शन का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं. तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय फंक्शन?
फंक्शन क्या है, देन फंक्शन डेफिनेशन कैसे होती है, फंक्शन कॉलिंग कैसे होती है, यू शुड टेल मी. अगेन आई एम राइटिंग हियर द पार्ट दैट इज व्हाट इज फंक्शन. आप लोगों का फंक्शन स्टार्ट हुआ है? यस. फंक्शन क्या है ये पहले पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज फंक्शन. देन नेक्स्ट पॉइंट विल बी फंक्शन डेफिनेशन, कैसे फंक्शन को डिफाइन करते हैं. एनीबडी कैन टेल मी फंक्शन डेफिनेशन. मैं बहुत आपको एक नॉन टेक्निकल एग्जांपल देने वाली हूँ सो दैट यू कैन क्लियर ऑल द पॉइंट. फंक्शन डेफिनेशन, देन फंक्शन कॉलिंग. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं लिख रही हूँ. ये आपको अभी क्लियर हुआ, बाद में आपको इश्यू ही नहीं रहेगा फंक्शन के रिलेटेड. फंक्शन कॉलिंग कैसे होता है, फंक्शन को लिखते कैसे, फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, व्हाट इज फंक्शन कॉलिंग हियर. ओके, एंड द लास्ट पॉइंट विल बी व्हाट, फंक्शन प्रोटोटाइप, और वी कैन से दैट फंक्शन प्रोटोटाइप, और उसको मैं बोलती हूँ, उसको बोला जाता है फंक्शन डिक्लेरेशन. ओके, so anybody can tell me this point. I'm not starting that is how it will executed in array, but you should know what is function. Anybody can tell me function क्या होता है. Yes, don't It yes, is a self yes, Madam, it is a self-contained block of statement that perform a given task. yes, exactly, it is a self-contained block. Yes. Okay, the one important part here, सेल्फ कंटेंट बॉक्स मीन्स व्हाट. अब तक हम लोगों ने कैसे देखा, हम लोग डायरेक्टली प्रोग्राम देखते हैं ना, बट मुझे एक टास्क परफॉर्म करना है. फॉर एग्जांपल मुझे एडिशन करनी है, 2 नंबर की एडिशन करनी है, तो मैं क्या करूंगी, मैं फंक्शन लिखूंगी ऐड नाम का. लेट्स से उसका रिटर्न टाइप है, दिस इज व्हाट फंक्शन नेम, इसको मैं लिख रही हूँ, दिस इज योर फंक्शन नेम. ओके, फंक्शन नेम है उसका ऐड, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अभी उसका डिक्लेरेशन पार्ट दिखाती हूँ. फंक्शन है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट राउंडेड ब्रैकेट शुड बी देयर, तो ही आपको पता चलेगा वो फंक्शन है, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है. ओके, सो अभी हम लोग देखने वाले हैं फंक्शन डिक्लेरेशन. ओके, फंक्शन डिक्लेरेशन क्या चीज है. ओके, सो फंक्शन डिक्लेरेशन मीन्स व्हाट, फंक्शन डिक्लेरेशन और फंक्शन प्रोटोटाइप. ओके, इसको बोला जाता है फंक्शन प्रोटोटाइप. अभी फंक्शन प्रोटोटाइप मतलब फंक्शन को डिक्लेयर करना जरूरी है क्या. यस, डिक्लेरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सपोज मुझे एडिशन परफॉर्म करनी है, डिक्लेरेशन में क्या चीजें जरूरी होती है, एनीबडी कैन टेल मी. मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देने वाली हूँ. तो यस, Name and parameters. यस, नेम ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शन का नेम And ऐड है. यस, उसका डेटा टाइप जरूरी है, डेटा टाइप जरूरी है yes, उसका. Return type. यस, whether रिटर्न we are टेम्पलेट्स. using integer yes, or यस, देन float. ओके, वेरिएबल पैरामीटर हो गए तो पास करने जरूरी है. yes. यस, अभी सब लोगों ने जस्ट म्यूट फ्रॉम योर साइड, जस्ट कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग. अभी मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने वाली हूँ आपको. ओके, 5 मिनट्स है हमारे पास, तो ये परफेक्टली कंप्लीट होगा. ओके फाइन. सो माय क्वेश्चन इज दैट, लेट्स से ऐसा अज्यूम करो कल आप लोगों को फेयरवेल पार्टी मिलने वाली है 3rd ईयर के स्टूडेंट से. मैंने क्या बोला, फेयरवेल पार्टी मिलने वाली है किससे, 3rd ईयर के स्टूडेंट आपको पार्टी देने वाले हैं. एवरीवन इज एग्री विद दिस. ओके, हाँ, 3rd ईयर के बच्चे पार्टी देने वाले हैं, फेयरवेल पार्टी आपको मिलने वाली. ओके, सो लेट्स से ऐसा अज्यूम करो कि आप लोग कॉलेज में हो और हॉस्टल में है. ओके, सो दिस इज द वन फंक्शन, ये आपका फंक्शन है. ओके, अभी मैं क्या बोल रही हूँ उस पर कॉन्सेंट्रेट करो. सो आपकी प्रिलिमिनरी चीजें क्या रहेगी वो फंक्शन की. लेट्स से आप हॉस्टल में हो और मैंने बोला कि बॉयज लोगों को क्या पहनना है, बॉयज लोगों को लेट्स से कोट पहनना है. ओके, कोट और जो भी है टाई जो भी है वो लगाने वाले हैं. ओके बॉयज, और गर्ल्स लोगों को क्या पहनना है, लहंगा. ओके, सो मुझे बोलो गर्ल्स लोग क्या पहनने वाले हो, लहंगा. गर्ल्स, ओके, क्या पहनने वाले हो, लहंगा पहनने वाले हो. ओके, सो यू टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट प्रिलिमिनरी. आप लोगों को ड्रेस कोड डिसाइड कर दिया है कि बॉयज कोट पहनने वाले हैं, गर्ल्स लहंगा पहनने वाले हैं, बट हॉस्टल के लड़कियों के पास तो वो नहीं रहेगा और बॉयज के पास नहीं रहेगा. वो क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे कि रूम में किसी के पास है क्या. इधर हॉस्टल में तो बहुत सारे फ्रेंड्स रहते हैं, है ना, उनसे आप लोग चेक करोगे. मतलब क्या है, कल फंक्शन है, आप पहले क्या करोगे, फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट. डिक्लेरेशन पार्ट मतलब आप क्या चेक करोगे कि आपके फ्रेंड के पास एटलीस्ट आपका उसके पास, जैसे मैं गर्ल्स का एग्जांपल लेती हूँ, उसके पास लहंगा है क्या,
लहंगा है तो आप लोग सिर्फ लहंगा लेके पहन के देखोगे वेदर इट इज प्रॉपरली फिटेड और नॉट, वो चेक करोगे। मतलब फंक्शन डिक्लेरेशन की वक्त जरूरी है क्या कि वो लहंगा आपने पिंक कलर का लिया है, ओके, पिंक कलर का लहंगा है और आपको चेक करना है उस पे ज्वेलरी मैचिंग है क्या एंड ऑल द थिंग्स, नॉट लाइक दैट। डिक्लेरेशन मतलब क्या, आपके पास वो लहंगा होना चाहिए और उसकी साइज आपके जैसी होनी चाहिए, वो फर्स्ट प्रिलिमिनरी है। मतलब हमारा टेक्निकल डिक्लेरेशन जो फंक्शन है उसमें इतना जरूरी है कि उसका रिटर्न टाइप क्या है, उसका रिटर्न टाइप फंक्शन का पता होना चाहिए और उसके अंदर जो पैरामीटर है उसका नाम भी पता होना जरूरी नहीं है। जस्ट डेटा टाइप इज रिक्वायर्ड डियर स्टूडेंट, जस्ट डेटा टाइप इज रिक्वायर्ड। वहां पे नाम की भी जरूरत नहीं होती है, सेमीकोलन होता है। सेमीकोलन मतलब क्या, सेमीकोलन हम लोगों को बता रहा है कि सेमीकोलन का मीनिंग क्या हुआ कि डिक्लेरेशन में सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास लहंगा है, यस लहंगा मिला है मैडम और वो मुझे प्रॉपरली फिट हो रहा है। आप लोग तुरंत मैचिंग वगैरह नहीं ढूंढोगे, मतलब डिक्लेर डिफिनेशन पार्ट इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके। फाइनली आपका डिक्लेरेशन पार्ट हो गया, आपको लहंगा मिल गया, ओके। अभी आप क्या करोगे, नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट मैडम, अभी तो हमें लहंगा मिल गया, अभी हमने क्या करना चाहिए, उसके ऊपर मैचिंग आप लोग ढूंढोगे, है ना। आप सब मैचिंग चीजें ढूंढोगे, मैचिंग मतलब उसके साथ में आप लोग इयर रिंग्स ढूंढोगे, है ना। उसके बाद मैडम कैसे हेयर स्टाइल करनी है, हेयर स्टाइल सोचोगे, एवरीथिंग, ओके, हेयर स्टाइल कैसे रहेंगी। और बच्चे गर्ल स्टूडेंट को तो मैचिंग सब लगता है ना, तो सैंडल कौन से पहनेंगे, ये सब चीजें आप लोग क्या करोगे, मैचिंग ढूंढोगे, ओके। और जब कल फंक्शन रहेगा, यू हैव वेयर ऑल द थिंग्स, यू हैव वेयर ऑल द थिंग्स मीन्स व्हाट, यू आप क्या करने वाले हो, वहां पे सारी चीजें पहनने वाले हो। और ऐसा कभी नहीं होता कि मैडम ये मैं भूल गई और ये मेरा पहनने का नहीं रहा, इसका मतलब है फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन के दिन आप लोग सारी चीजें पहन के आओगे, तो आप मतलब ईच एंड एवरी पार्ट शुड बी देयर, दिस इज कंसेप्ट कॉल्ड एज ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। मतलब आपका फंक्शन एग्जीक्यूशन। अभी क्या है, जैसे आपका फेयरवेल का पार्टी है, गर्ल स्टूडेंट जैसे सब मैचिंग हेयर स्टाइल करके इयर पहन के सब प्रॉपर फंक्शन एग्जीक्यूशन हो रहा है। तो फंक्शन एग्जीक्यूशन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फंक्शन एग्जीक्यूशन जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया वैसे ही हमारा टेक्निकल फंक्शन एग्जीक्यूशन में उसका रिटर्न टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का नाम जरूरी है, उसके जो पैरामीटर्स है, सिर्फ डेटा टाइप देके चलेगा नहीं, उसको क्या लगेगा फ्लोट, उसका नाम भी आएगा, लेट से ए, देन फ्लोट क्या आएगा, फ्लोट बी भी आएगा। मतलब फंक्शन, मैंने डिक्लेरेशन में क्या बोला, सारी चीजें जरूरी नहीं होती, बट फंक्शन डेफिनेशन में सारी चीजें जरूरी होती है। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, उसको फंक्शन को डिफाइन करते हैं, ओके। लास्ट पॉइंट इज फंक्शन कॉलिंग, ओके। सो फंक्शन कॉलिंग मतलब क्या, सपोज मैंने तेजस्विनी को बुलाया, ओके, सो मैं जस्ट किसको कॉल करूंगी, सिर्फ मैं एक स्टूडेंट को बोलूंगी कि प्लीज टेल तेजस्विनी टू कम हियर, ओके। सो सिर्फ उसका नाम जरूरी है, तो तेजस्विनी नाम इज सफिशियंट टू कॉल हर, ओके। सिर्फ मैं तेजस्विनी को कॉल करूंगी उसके नाम से, मतलब फंक्शन ऐसे ऐसे बोलूंगी क्या उसने पिंक कलर का लहंगा पहना है, उसने इयरिंग्स पहने हैं, उसने हेयर स्टाइल किया, नॉट एट ऑल। सो फंक्शन डेफिनेशन रिक्वायर्ड ओनली नेम, ओनली